KCL understood, one and second equation done. And from the same equation, can I say this Ig is 0? Why we are taking Ig 0? Balanced. Because this Wheatstone bridge is balanced. In balanced condition, my current which is passing through the galvanometer will be taken as 0. So this Ig is 0. Now if this Ig is 0, let me explain you what is the value of current at node B. So at node B, if I will write node, at node B, if I will write KCL equation node B, I2 is equal to I4 directly I am writing. Why? Because I4 plus Ig, but Ig is 0. So that is why this equation and the second equation at node D where I1 is equal to I3 I will directly write. Why? Because Ig is 0. यहाँ से Ig ऐसे, यहाँ से आ रहा Ig, so this will be the direction, right? So Ig will be 0. ये दो equation हमारे पास और मिल गई. We have these two equations plus these two equations. Now there comes the I4. I2 is equal to Ig, as I told, it is 0 in the balanced condition, but actually it is I4 plus Ig. Second step, you will be ignoring Ig and directly I4 is equal to I2. This way you will do in exam. KCL is done. The KCL or junction rule सबको समझ में आ गया? No doubts, Yasmin? So if no doubts, then we are going to KVL now. KVL में no doubts. Karan is also listening to me. We are making loop. Again, we are making one loop that is A, B, D, A. This loop, A, B, D, A means we are talking about this internal circuit. तो अभी इसमें बहुत ध्यान से सोचना है. इसी में KVL भी एक्सप्लेन कर दो. ये नोड पे करंट इज एंटरिंग, सो इट इज पॉजिटिव. करंट इज लीविंग, इट इज नेगेटिव. करंट इज एंटरिंग पॉजिटिव, करंट इज लीविंग नेगेटिव. सो लेट अस मूव दिस वे बिकॉज हमने अंदर एरो बनाया हुआ है क्लॉकवाइज. कहां पे लास्ट में वी आर मूविंग आउट ऑफ द नेगेटिव टर्मिनल. दैट इज व्हाई शी इज राइटिंग I2 R2 माइनस. माइनस साइन इंडिकेट्स दैट जब वो करंट यहां से निकला इट वाज द माइनस टर्मिनल. तो यहां से माइनस, अभी यहाँ प्लस एंड माइनस है बट इट इज ऑफ नो यूज बिकॉज ऑफ द जीरो वैल्यू ऑफ Ig. इसमें Rg भी होगा. एक स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर इज आल्सो देयर, बट डज दैट मेक एनी सेंस बिकॉज Ig इज 0. जो हमारा ये है ना, इधर Ig ही 0 है, ब्रांच करंट इज 0. दैट इज व्हाई दिस ब्रांच मेकिंग नो यूज. आपने इसीलिए इसको इग्नोर किया है in this specific derivation of Wheatstone bridge. Secondly, we are directly writing from the last, which is the terminal last. Plus. Nine. Ritik will tell me how it is plus. Why it is plus? Current flow. Current is coming to this point and leaving to this point. So that is why. अब इधर से हम इधर आ गए. इधर से when we are coming to this way, there should be I1 R1 plus. Last में it is coming from the plus terminal. सबको आया, निसर को आया समझ में? Last में. हम ऐसे जा रहे हैं. फिर I2 R2 प्लस भी होगा. I2 R2 कैसे प्लस होगा? लास्ट में माइनस जहां से निकल रहा है. When it is leaving the node, what is the sign? This is the point from where it is leaving. This is a bit confusing, but once you will understand, it will never pose any problem. Karan, I expect you to understand this thing very properly. Okay. So once you are done with this entire, we will move to the next loop. Same purpose. यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा. माइनस एंड प्लस. 4 minus 3 plus. KV. Yes. How? Because see, we have direction. We have shown the direction. उसी को कंसीडर करना है. ये मैंने आपको एक ट्रिक बता दी है. इसके अलावा कुछ नहीं करना है. Otherwise, so once I have shown you VB minus VA, वो बहुत लंबा प्रोसेस है. एग्जाम में वो सब कर ही नहीं सकते. It is not feasible to do each and every node calculation और फिर करना practically possible नहीं है in the exam. You will directly write these equations once you are knowing this fact. इसलिए आपको मैंने shortcut method. This method will always go correct with all the questions. None of the questions will be wrong if you follow this method. We have solved entire exercise and example with this method. So आपने ये दो equation बना ली. अब मैं आपको, क्योंकि मुझे ratio निकालना है, Karan is listening. I1 R1, can I write from equation to I2 R2 is equal to I2 R2, Karan? Yes, ma'am.
Now from the second equation, can I write I3 R3 is equal to I4 R4 students? Yes. Now this equation 3, all of you will do in the notebook. We'll divide the equation 3, divide left hand side with the corresponding left hand side of equation 3 and 4, divide and do the same for the right hand side. Very good. चलो कर देते हैं. Can I use the same board? Same यहीं पे कर देते हैं. I am dividing it. चलो divide कर रहे हैं अब हम, और divide करने के बाद I want which are the two things which are going off. Then I1 and I3 green I want. हाँ. तो इसमें से I1 and I3 क्यों कट करने को नशरा बोल रही है? Because we have already proved it. So this way. And similarly, using these, but you will do it in a very systematic step-by-step way, using equation 1 and 2, whichever marking, each and every equation will be marked. This is just the revision. That is why we are doing it in the fast way. We are just explaining you the concept. That is why we are doing it in a single step. Now, Ritik and Nisarg, any doubt now in the derivation? Yes. When the current is entering any point, it will always be a positive terminal. Negative. Leaving will be negative. So here this I2 is positive and here I2 is leaving negative. सबसे पहले मार्किंग कर देना. Yes. मार्किंग हो गई. अब हमने अंदर एक लूप बना लेना है. अब लूप में we need to move. अब in the loop we need to move. I2 R2 यहाँ देखो जहाँ से वो बाहर निकलेगा वो साइड हम ले लेंगे. So it is moving from this way minus. Yes. Minus से बाहर निकला तो I2 R2 minus कर देंगे. Similarly, this Ig is 0, so we will not consider this loop. Otherwise, तो minus Ig Rg is the symbol. Minus होता. इधर क्या हो रहा है? इधर प्लस है, इधर माइनस है, तो इधर से जब वो निकलेगा इधर positive. Okay. This way, all the loops in the universe will be simplified with this. जब आप टर्मिनल मार्किंग, फिर से ध्यान से सुनो, जब आप टर्मिनल मार्किंग करते हैं उस समय ये वाले करंट्स को आप कंसीडर कर रहे हैं, लूप करंट को आप केवीएल में कंसीडर करते हैं. व्हेन यू आर मार्किंग पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल इन अ रजिस्टर, यू विल बी कंसीडरिंग दीस करंट्स व्हिच इज डिवाइडिंग. वो करंट कंसीडर होता है. बट लूप करंट जब कंसीडर होता है तब हम केवीएल की बात कर रहे हैं, उस समय लूप करंट्स कंसीडर होता है. उस समय ये हमें सिस्टम लगाना है. आइडियली देखें तो हर एक पॉइंट के वोल्टेज को प्रीवियस पॉइंट के वोल्टेज से माइनस वोल्टेज ड्रॉप को हम फाइंड कर रहे हैं. व्हाट इज दिस I1 R2 एक्चुअली क्या है? वोल्टेज ड्रॉप. I1 R1 वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर 1. I2 R2 वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस. दिस इज द नोटेशन टेकन बाय एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. दैट इज व्हाई वी आर फॉलोइंग दिस. हम उस तरह से कर रहे हैं जो भी एनसीईआरटी में एज इट इज, हम इसी मेथड को थ्रू आउट एग्जांपल्स और एक्सरसाइज में लगाएंगे. Now we will not be using any other method for reducing the complexity and the confusion in the question. हम केवल इसी कॉन्सेप्ट को है ना. अब सारे क्वेश्चन में हम लगाएंगे. एक क्वेश्चन और मैं एक्सप्लेन करती हूँ बिकॉज आप केवल देख के घबरा रहे हो. वो है एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 3.6. बहुत क्वेश्चन है. यस करण. मैम कैन यू प्लीज टेक अ पिक ऑफ दिस एंड सेंड इन ग्रुप. कैन यू प्लीज नोटबुक मैम इसका फोटो खींच के मतलब ग्रुप में सेंड करो ना. I will click the photograph and will send